बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Standard 8, my English book, Standard 8. Today we are going to learn Unit 2, 2.1, try again. That is warming up exercise. First we are going to see our chit chat. So we'll see question number 1. What do you like, poem or story? So you have to answer whether you like poem or story. Any one of that you have to choose. So number 2 is what kind of poem do you enjoy the most? आपको कौन सी पोएम सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं? इंस्पिरेशनल, फनी, जो भी आप पोएम इंजॉय करते हो, यू हैव टू राइट दैट. देन डू यू थिंक पोएम कैन इंस्पायर अस? You have to answer yes or no. Inspirational poem. Do you remember any such inspiring poem? I think we all remember our class 7 poem, that is We Shall Overcome. I think whole class loved that poem. Then when did you learn or listen to it? कब आपने सुनी थी? What message do you get from it? कौन सा मैसेज मिला था आपको उससे? As we are doing online classes, so we can do anything in group or such thing. So when we will be online, we'll see the question number 1 and we'll discuss about it. Let's see question number 1b, experience. Okay, if we have to make a success in our lifetime or in our any work, what are the main thing we have to do? Okay, that thing I am trying to show you in the flow chart is given. अब जब भी कोई काम करते हो तो उसकी कामयाबी के लिए क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव. योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर. देन डेडिकेशन. यू हैव टू वर्क हार्ड. यू शुड बी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क. देन इम्प्लीमेंटेशन. वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. आप जो भी करने की सोच रहे हो, आपको उसको प्रैक्टिकली करना है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है. देन जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वन थिंग कम्स, दैट इज़ एरर. ट्राई एंड एरर. हम कोशिश करते हैं, फिर कुछ चीज़ गलत हो जाती है, फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो एरर. देन व्हाट वी डू, वी ट्राई अगेन. फिर से कोशिश करते हैं. देन ओनली वी गेट सक्सेस. तभी हमको क्या मिल. लेट्स सी दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ ए स्पाइडर. So there are the pictures of a spider climbing a wall and some lines are given. We have to match the lines with this picture so that we can easily learn which line is belong to which image. First one is the spider climbed again a little higher. So I think this one is goes with it. Then second one is yet it did not give up and climb higher and higher. So he climbed higher and higher. And what happened? It slipped and fell down. इतना ऊपर जाने के बाद वापस से वो गिर गया. Then fourth one is a spider began to climb a wall. Again he start to climb again. Then what happened next? Finally he reached the top. It fell down again and second time again he fell down. So what is the moral of this story is try again and again until you success. हमको अपनी कोशिशें कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए जब तक हम उस चीज़ में कामयाब नहीं हो जाते. तो लेट्स सी आवर पोएम वी आर गोइंग टू लर्न इज ट्राई अगेन. So we'll definitely going to inspire that by that poem, try again.